Okay, so yes, so we discussed the negative sentences. So there are the 4 types of sentences that are purely based on the tenses. Can you name them? What are the 4 types of sentences that are based on the tenses? Affirmative, Very nice. Affirmative. negative, Negative. हाँ. Very nice. interrogative, हाँ. interrogative, negative. Excellent. Interrogative, negative. So we have discussed right now affirmative and negative. Affirmative and negative sentences we have discussed till now. Okay. Just for example, I'm just taking one sentence and try to convert that sentence into English. रीना, बच्चे क्लास में शोर मचाते हैं. फिर से मैम प्लीज रिपीट द सेंटेंस. बच्चे क्लास में शोर मचाते हैं. Children make noise in the class. Children make noise in the class. सुशील, बच्चे क्लास में शोर नहीं मचाते हैं. Children's not. Children's नहीं, children. Oh, sorry. Okay. हाँ. इसका सिंगुलर क्या होता है? What is the singular of children? Child. Child. Very good. Very good. So children. Children not shout in the class. You can say. नहीं, not क्या, not नहीं आएगा. Then you have, if you want to make the sentences into negative, so you have to take the help of do family. Children do not. So you have to put does not, do not, does not, or did. हाँ. But children, children के साथ you cannot put does not because children is a plural subject. Plural. So what is the sentence? Remake, Sushil, again reframe this sentence. Children does not. Do not. Sorry. Do not shout in the class. Make noise in the class. Children do not make noise in the class. सबिता, मैंने लास्ट ग्रामर की क्लास नहीं अटेंड की. लास्ट ग्रामर की क्लास नहीं अटेंड की. I do not attend my last grammar class. वेरी गुड. सेंटेंस का टेंस गड़बड़ कर दिया. अब देखो लास्ट क्लास हो गया. लास्ट क्लास कौन सा टेंस हो गया सबिता? व्हाट इज द टेंस? लास्ट क्लास. पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में डू का क्या बन जाता है? Did not, ma'am. Did not. Again reframe this sentence. Again reframe. I did not attend my last class. Last class. I did not attend my last grammar class. Okay. अनुराधा, मैं कल शॉपिंग के लिए जाऊंगी. मैं कल शॉपिंग के लिए जाऊंगी. I will go for shopping tomorrow. I will go for shopping tomorrow. Okay, very nice. हिमानी and बिस्वा. चेतना, यहाँ कैसे C2C नहीं चल रहा? Oh ma'am. अच्छा, नहीं C2C सुनी. Okay. Yes. Okay, so Himani and Biswajit, please listen. Nasibul, turn on your camera. Okay, so we are, Chetan, we are going to discuss the tenses. Okay, interrogative tenses we are going to discuss. Nasibul, welcome to the grammar session. But dear, how you cope up? Have you gone through with the recordings? नो मैम, नो. ओके. तो कोई बात नहीं, आज की क्लास अटेंड करो और फिर उसके बाद एक बार मेरे से कल मॉर्निंग में बात करो. ठीक मैम. ठीक है, आज की क्लास अटेंड कर लो, चाहे बेशक स्विच ऑफ कर लो कैमरा, कोई इशू नहीं है. एक बार सुन लो बस क्लास. ओके मैम. ठीक है. ओके, right. So guys, we discuss. Okay, Surangna has also joined. So guys, we discuss all these things, right? Now we are going to discuss the interrogative sentences. Now, why we need the interrogative sentences? कौन से होते हैं interrogative sentences? क्या वाले sentences? क्या, जिसमें हम क्या बच्चे क्लास में शोर मचाते हैं? So देखो guys, interrogative sentences सबसे पहले समझो कि why we need the interrogative sentence. क्यों जरूरत है interrogative sentences की? To ask questions. To ask questions. क्या होगा? अच्छा चलो, अगर मैं questions ask करती हूँ, इससे क्या होगा रीना? If I'm asking the questions, then we'll get reply. Then means answer. We will get the answer. The answers भी मिल गए, फिर उससे क्या होगा? You ask me one question, I will give you the answer. Then I will हम receive. communicate कर पाएंगे ना? Yes. We can Conversation communicate के लिए हमारे को कौन से sentences सबसे ज्यादा fruitful होते हैं? Interrogative sentences. Whenever you want to start the conversation with anyone,
either with the known person or to the unknown person, you always need to frame the interrogative sentences for the conversation. अब guys, interrogative sentences जब आप put करते हैं, so there are the two types of interrogative sentences. One, interrogative sentences are purely based on the tenses. जो किसके ऊपर बेस है? हमारे tenses के ऊपर बेस्ड है. And second, interrogative sentences होते हैं हमारे WH family के. WH family में मतलब why, what, where, how much, how many, when, all these are the WH family sentences. Why it is called WH? क्योंकि W का मतलब होता है all W's. जैसे why किससे स्टार्ट है? W से. Where किससे स्टार्ट है? W से. When किससे स्टार्ट है? W से. How, H, how many, how much. So that's why it is called the WH family. So if you ask a question in the form of the interrogative sentences that are based on the tenses, you will get the closed answers. जब आप interrogative sentences आप put करते हो ना, तो you will get two types of answers. One is called the closed answers and second is called the open answers. Closed answers होते हैं, बस समझने के लिए समझो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. Closed answer होते हैं yes or no की फॉर्म. Yes or no की फॉर्म. ठीक है? Did you go to school today? Did you go to school today? क्या आप स्कूल गए थे? You will get the answer only in yes or no. Yes or no. But अगर suppose करो, if I ask this question, कि where do you put up or what are your hobbies? So then you start giving the explanation. Then you will start giving the explanation. Okay. So that is called the open-ended question, जिसमें आप डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. Right? Clear this thing? So right now in today's session, we are going to discuss the sentences which are purely based on the tenses. Right? So it's very simple. That is not so much tough. Hi, Sampi. Hello, ma'am. Okay. I joined late. नहीं कोई बात नहीं. We are just starting the interrogative sentences. Okay. So now this is a sentence. This is a sentence. She knows my number. This is a sentence. She knows my number. Okay. Now what you have to do, Sabita, you have to convert all the forms of the verbs in affirmative. Affirmative में जल्दी से इन सारे sentences को convert करो. Affirmative forms. Start. She knows my number. She is knowing my number. She has known my number. She has been knowing my number. Very good. She knew my number. She knew my number. She was knowing my number. She had known my number. She had been knowing my number. Excellent. She will know my number. She will know my number. She will be knowing my number. She will have known my number. She will have been knowing my number. Okay, great. ठीक है, done. So this is simple. Okay, now interrogative sentences. Now, Sushil, can you read this sentence? Yes, ma'am. She is going to market. How many verbs in this sentence? Is going. हाँ, तो two verbs. So there are the two Yes. verbs. So Yes, ma'am. their minimum two verbs are mandatory to make the interrogative sentences. Minimum two verbs are mandatory to make the interrogative sentences. So what you can do, you just take out the first verb before the subject. कैसे बनाते हैं हम interrogative sentences को? First is verb को, she- हाँ, is she going to market? Is she going to market? वह मार्केट जा रही है, she is going to market. क्या वह मार्केट जा रही है? Is she going to market? And interrogative sentences always ends with the question mark. ठीक है, यहाँ तक clear? Simple, right? Okay, next. She feels good. She feels good. Reena, how many verbs? Single verb, ma'am. Single verb, but minimum how many verbs? Two verbs are mandatory. Two verbs are mandatory. Surangna, we have to take the help of which family? Do family. Do family. Yes, do family. Now you have to check. अब do family से अगर हम लेंगे तो first we have to check कि ये sentence कौन से tense में लिखा गया है? Present tense. Simple Present tense में. तो present tense में do family के कौन से दो verbs होते हैं? Do and does. Do and does. But now she क्या है? What is she? She is a singular subject or the plural subject?
Singular. सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के Singular. साथ डज आता है या डू आता है? Does. Does. डज Does. आता है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? Feel good. Does she feels Does she good? feel good? Does she feel good? Very good. Feel Does good. she feel good? अब समथिंग, मेरा क्वेश्चन ये है डियर, अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पर फील्स लिखा था, बट वंस वी कन्वर्ट इनटू द इंटेरोगेटिव तो यहाँ पर फील्स का फील कैसे हो गया? Because we include does. Does she feel good? After does, not add any s with Why? because mother verb only use. Yes, because whenever we take the do family जब भी हम लेंगे उसके साथ जो next main verb आएगा, that should always be in the mother Mother. form. Mother form. mother. She spoke to me, Anuradha. Does she did she speak to me? Did she speak to me? Very good. Did she speak to me? Because spoke. Shushir, what is the tense it is? She spoke to me. कौन सा tense है ये? Ma'am, Past tense but है. past Past indefinite. tense है. Past. ठीक है, तो past tense है, Past. तो do का क्या बन जाएगा? Did. Did. Did she speak to me? Did she speak to me? Now this is a sentence, guys. I'm just coming. You just write down this sentence and try to make all the interrogative forms. I'm just coming. Okay, done? Raj will have completed his task. This is a sentence. Raj will have completed his task. Okay. Now what you have to do, you have to convert this sentence into the interrogative. Nasibul, can you tell me this sentence comes under which time frame? कौन सा tense लग रहा है आपको ये? Raj will have completed his task. कौन सा tense लग रहा है ये? मैम future perfect. Very good. Future perfect. इसको interrogative में convert करो. Just convert this sentence into interrogative. Will Raj. Will. First verb को बाहर ले लो subject से. Just take out the first verb before the subject. Will Raj completed? Will Raj. Only first verb you have to take before the subject. Rest of the sentence remain as it is. Will Raj have completed his task? Yes. Will Raj have completed his task? Very good. Okay. So Rangna, can you convert this sentence into all present interrogative? Present interrogative. Raj. Interrogative. Yes, ma'am. Assertive and interrogative both are. Interrogative आपको बनाना है. Okay. Will not. Present. Sorry. Do does. Present में do does. Okay. Do does. अब राज के साथ देखो, राज के साथ क्या आएगा? Do आएगा, does आएगा. Does. हाँ. Does. हाँ. Does Raj complete his task? Does Raj complete his task? Very good. Present continuous. Does. Sorry. Continuous में क्या आता है? Is MR. Raj is Raj his task. Raj has completed his task. Raj. नहीं. Present continuous क्या बताया? Speak again. Raj is completing his task. Raj is completing his task. इसको interrogative में convert करो. Raj is completing his task, na? हाँ. Is Raj completing the His task? task. Very good. Perfect बनाओ. Has Raj completed his task? Very good. Next.
Has Raj been completed his task? Completing. completing, Completing, Has sorry. Raj been completing his task? Okay, very nice. Shushil, can you make all past? Yes, ma'am. Did Raj completed his task? Complete. Did के साथ do family का कोई भी Okay. verb आएगा उसके साथ next verb mother verb आएगा. Okay. हाँ, next. Raj completing his task. Was Raj completing his task? Yes, ma'am. Hmm. Had Raj completed his task? Hmm. Uh, been completing his task. Speak again. Had Raj completing his task? Had Raj been completing? Been completed. Sorry. Been completing his task. Reena, what is future? Will Raj complete his task? Will Raj be completing his task? Will Raj have completed his task? Will Raj have been completing his task? Very good. Great. Now next. She still plucks flowers. Anuradha, Sampi, be ready. Anuradha. does she still pluck flowers? Hmm. Is she plucking? Is she still plucking flowers? Okay. Has she still plucked flowers? Has she still pluck? Has she been still plucking flowers? Excellent. Sampi. Yes, ma'am. D- did she still plucked flowers? Hmm. Uh, was she still plucking flowers? Hmm. And had she still plugged Hmm. flowers? And has she been Had. sorry, had been she still plucking flowers? Okay. That is also okay. अगर had been भी ले रहे हो तो ठीक है. Okay. Done. Okay. Sabita, what is Yes, ma'am. future? Will she still pluck flowers? Hmm. Will she still be plucking flowers? Hmm. Will she still have plucked flowers? Hmm. Will she still have been will she still have been plucking flowers? Excellent. Now, guys, this is an assignment. What you have to do, I have written all the forms of sentences. What you have to do, you just convert these sentences only in interrogative. ठीक है? इन सिर्फ sentences को what you have to do, convert these sentences into interrogative only. Either you want to write into your notebook, it's totally up to you, or if you want to go through it in your mind, that is totally up to you. I am giving you 20 seconds time. My mother. Only interrogative you have to make all these sentences.
Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Already. okay. How many participants we have? Okay, guys. So let's start with Sampi. Sampi, just convert first two sentences into interrogative. Does my mother cook food? Okay. And is my mother cooking food? Only just make. No need to make the 12 forms. Does my Okay. mother cook food? Very good. What is the second sentence? Second, oh, okay. Teacher is teaching the class. Ah. Does teacher teach the class? Why does teacher teach the class, Teach. dear? There are the two Sorry, verbs sorry. in this sentence. Just take Oh. out the first verb before the subject. Yes. Is teacher teach the class? Is teacher teaching the class? Is teacher teaching the class? Teaching the class. Okay, Sorry, okay, is okay, teacher teaching okay. the class? Great. Yes. So, Rangna, Dheeraj, you have joined late? Yes. Unmute, Dheeraj. Ma'am, I'm late from office, sir. Okay, actually, Shishir was asking about you. So that's why we are asking. Okay. Okay, yes. So, Surangna, number third, number fourth. Number 4. Number third, number fourth. Acha. Gardener was watering the plants. Hmm. Was gardener watering the plants? Very good. Was gardener watering the plants? Great. Next, we made a cake for you. We made a cake for. Did we make a cake for you? Excellent. Did we make, M-A-K-E, make a cake for you? Shishir, number fifth, number sixth. Do you speak English? Do you speak English? Excellent. Next. Does 2 plus 2 make 4? Does 2 plus 2 make 4? Reena, is Sushil right? Don't you think so? Ki 2 plus 2 seems to be a plural subject? No, ma'am. It's we can see that here the verb is Verb, yes, because guys, if you are getting confused whether it is a plural subject or whether it is a singular subject, so what is the tip? You just check the verb. Verb को check करो. अगर verb के साथ s लगा हुआ है, so it means we are talking about the singular subject. और singular subject के साथ always comes the does. Does 2 plus 2 make 4? Make 4. Okay, number 7th, number 8th. Yes, Anuradha. Yes, ma'am. Number 7 and number 8. Will she go to market? Will she go to market? Yes. Snow White. And does Snow White? Does Snow White. Again, this is a whites. Whites is a verb. S lag gaya, so that's why you are saying does Snow White. Okay. Yes, Sabita. Number 9th, number 10th. People have actually met with an alien. Have people actually met with an alien? Yes, very good. Next. Can borrow your grammar book for a day? Can I borrow your grammar book for a day? For a day. Very good. Can I borrow your grammar book for a day? Reena, number 11th, number 12th. Does he care about us? Does he care about us? Very good. Can friends again? Can we be friends again? Dheeraj, number 13th, number 14th. Hello. Yes. Ma'am. 13, 14. Have you completed your homework? Have you completed your homework? Okay, great. And do you make a plan? No. Sorry. Did you make a plan? Did you make a plan? Okay. Anil, we are discussing the interrogative sentences. Okay, ma'am. Nina slept well. How to make this sentence into interrogative? Did. Yes, Surangna? Did Nina sleep well? Did Nina sleep well? Anil, कैसे हम बनाएंगे interrogative sentences को?
it's mandatory that we should have the two verbs. और अगर एक ही verb है तो second verb we always take from the do family. Do, does, did. Okay, this sentence is written in the past tense. That's why we have taken did. Did. Anil, just read the 16th number. It has been raining since morning. कितने verbs हैं इसके अंदर? How many verbs? 1, 2, 3. 3, ma'am. ठीक है ना? So just take out the first verb before the subject. First verb. First verb निकालो. First verb. First verb कौन सा है इस sentence के अंदर? It has been raining के अंदर. Raining. First verb is raining. Sorry. Has. Has. Has is a first verb. First verb को सबसे पहले लो, sentence से पहले लो. Has been raining since. Has it been raining? Okay. Has it been Has raining it since been morning? raining since morning? Has it been raining since morning? Samir? Good evening, ma'am. Good Sorry, evening. ma'am. I reached just office, ma'am. अच्छा guys. Sorry, ma'am. कोई बात नहीं. 100 of buildings collapsed in the earthquake. We are talking about the interrogative sentences. So Samir, Anil, you just listen carefully. Okay, Yes. ma'am. Reena, Yes, ma'am. 100 of buildings collapsed in the earthquake. Did hundreds of buildings collapse in the earthquake? Did hundreds of buildings collapse in the earthquake? Very good. Some people, 8 of us Yes. had gone there. 8 of us had gone there. Had 8 of us gone there? Had 8 of us gone there. Had 8 of us gone there. Okay, chalo, I'm giving you some sentences. Convert that sentences into English and quickly convert that sentences into the interrogative. Okay? Okay, ma'am. Okay, Shushila, Chetna, Himani. Guys, you are listening? Yes, ma'am. Okay. Right. Now write down some sentences. Write down some sentences. दो घंटे से बारिश हो रही है. 2 घंटे से बारिश हो रही है. Second sentence. इस संडे तक मैं अपनी नई गाड़ी खरीद चुकी होंगी. इस संडे तक मैं अपनी नई गाड़ी खरीद चुकी होंगी. इस संडे तक मैं अपनी नई गाड़ी खरीद चुकी होंगी. नेक्स्ट. बच्चे 10 मिनट से शोर मचा रहे हैं. बच्चे 10 मिनट से शोर मचा रहे हैं. नेक्स्ट. प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले साल 15 अगस्त पर भाषण दिया. प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले साल 15 अगस्त पर भाषण दिया. Ma'am, please read the sentence. प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले साल 15 अगस्त पर भाषण दिया. मैं कल स्कूल जाऊंगी. मैं कल स्कूल जाऊंगी. हम कल इस समय मूवी देख रहे होंगे.
हम कल इस समय मूवी देख रहे होंगे. गाइस प्लीज राइट डाउन इन हिंदी ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज इट रेंडमली कम्स इनटू माय माइंड. हम कल इस समय मूवी देख रहे होंगे. जब मैंने लॉगिन किया तो ग्रामर की क्लास स्टार्ट हो चुकी थी. जब मैंने लॉगिन किया तो ग्रामर की क्लास स्टार्ट हो चुकी थी. जब मैंने लॉगिन किया तो ग्रामर की क्लास स्टार्ट हो चुकी थी. पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है. पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है. चलो फर्स्ट कन्वर्ट दी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. सिंपल अभी इंग्लिश में कन्वर्ट करना है. पहले फर्स्ट यू नीड टू डिस्कस विद मी द व्हाट इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड देन वी विल कन्वर्ट दी सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव. ठीक है, चलो. This is a mixed form of all the tenses. अच्छा एक और लिख लो लास्ट सेंटेंस. मैंने अभी अपना डिनर फिनिश किया है. मैंने अभी अपना डिनर फिनिश किया है. ठीक है, डन. चलो लेट्स स्टार्ट. आई एम गिविंग यू 20 seconds टाइम. Let's start. Okay, Anuradha, what was the first sentence? Yes, ma'am. First one is it's been raining for 2 hours. नहीं, एक बार पहले हिंदी में बोलो मेरे को सेंटेंस. लिखा नहीं होगा हिंदी, है ना? किसी ने लिखा है हिंदी? एक बार मेरे को बस क्रॉस चेक करना है कि व्हाट द टेंस. या 2 घंटे से बारिश हो रही है. ओके, 2 घंटे से बारिश हो रही है. हाँ, अनुराधा आप बोलो. स्पीक योर सेंटेंस. It's been raining for 2 hours. It has been raining for 2 hours. It has been raining for 2 hours. Okay. Anyone who has written apart from this? Yeah, ma'am. It has been raining for 2 hours. Huh, so same sentence. Huh? I'm asking if anyone has written. It's raining. Ma'am, I have written. Yes, what you have written? It has been raining since 2 hours. It has been raining since 2 hours. Okay. Ma'am, Okay. Chetna. ma'am, Okay, I? Sampi.
Ma'am, since 2 hours it have been raining. Since 2 hours it has been raining. Okay, okay, okay. Chetna? It It has is been raining raining for for 2 2 hours. hours. It has been raining. Okay, Anil? It has been raining for 2 hours. It has been raining for 2 hours. Okay, अच्छा श्वेता is also joined. अच्छा श्वेता C2C नहीं हुई है, हाँ? तभी DMP students आज दिख रहे हैं सारे. Right, right, right. देखो अभी थोड़ी देर पहले तो मैम अच्छा okay, ठीक है. अच्छा देखो सेंटेंस बनेगा. सुशीला सुनो, समीर सुनो. इट अच्छा समीर ने तो सही बोला था. इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours. For 2 hours because we are talking about the duration. 2 घंटे से बारिश हो रही है. कौन से 2 घंटे से हमें नहीं पता. सुबह के 2 घंटे हैं, दिन के 2 घंटे हैं, रात के 2 घंटे हैं, बस 2 घंटे हैं. So 2 घंटे tells us about the duration. So whenever we talking about the duration, we have to put for. स्पेसिफिक टाइम नहीं है. हाँ, अगर सपोज करो सुशील सेंटेंस होता 2 बजे से, दिन के 2 बजे से बारिश हो रही है. It's raining. has been raining. Has been raining since 2 o'clock. Since 2 o'clock कहाँ का 2 o'clock? दिन का 2 o'clock, रात का 2 o'clock. Day में. Sorry. अगर देखो या तो बोल दो since 2 p.m. it's understood कि we are talking about the afternoon. Or you can say since 2 o'clock in the afternoon. But you have to choose a correct tense. Tense होगा आपका it has been. Don't say it is. Don't say it is. अगर सपोज करो सेंटेंस ये होता सुरंगना ग्रामर की क्लास चल रही है, इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे? ग्रामर की क्लास चल रही है. हाँ, क्लास इज रनिंग. हाँ, ग्रामर क्लास इज गोइंग ऑन. ग्रामर क्लास इज गोइंग ऑन. ठीक है, बिकॉज वी डोंट मेंशन एनी स्पेसिफिक टाइम. We don't mention any specific time. So we can say simple grammar class is going on. Is going on. और अगर मैं ये बोलती ग्रामर की क्लास पिछले 1 घंटे से चल रही है तो क्या बनाते? ग्रामर क्लास इज गोइंग for 2 hours. Has Last been going. हाँ, रीना, हाँ, बोलो रीना. ग्रामर क्लास, हाँ. Grammar has been going on for 2 hours. The grammar class has been going on पिछले 2 घंटे से. रीना आप देखो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया पिछले 2 घंटे से. For last 2 hours. Last 2 hours. Since last 2 hours. Since last 2 hours. Since last 2 hours. Since last, बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया ना पिछले 2 घंटे से. अगर मैं सिंपल बोलती ग्रामर की क्लास 2 घंटे से चल रही है तो वी डोंट नो अबाउट कौन से 2 घंटे, लेकिन मैंने स्पेसिफिक कर दिया पिछले 2 घंटे से. सो देन वी हैव टू राइट ग्रामर क्लास हैज बीन गोइंग ऑन सिंस लास्ट 2 hours. यहाँ क्लियर हुआ? इज नहीं आएगा, हैज बीन आएगा. हैज बीन आएगा, हैज बीन या हैव बीन आएगा. अनिल, अनिल इसका जरा सेंटेंस बनाओ. कौन सा मैम? जो मैं बोल रही हूँ, बच्चे 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं. बनाओ अनिल. अनिल आज की क्लास में ही बनाना है. क्या मैम? बच्चे 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं. बनाओ. बच्चों की इंग्लिश क्या होती है अनिल? चाइल्ड. चिल्ड्रन. चिल्ड्रन. हाँ, चिल्ड्रन क्या आएगा? टेंस देखो क्या आएगा? मैडम और एक बार सेंटेंस बताइए मैडम. बच्चे 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं. चिल्ड्रंस Children. has been reading since have been. have been Have reading been. for 2 hours. Children have been और children's नहीं होगा ना children, और because it Children. is a plural subject so we have to put have. Children have been studying For 2 hours. For 2 hours. ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस. समीर, व्हाट वाज द नेक्स्ट सेंटेंस इन हिंदी? इस संडे तक मैं अपनी नई गाड़ी खरीद चुकी होंगी. हाँ, इस संडे तक. हाँ हाँ. I will have been buying new car since coming Sunday.
Okay, I Yeah. will have been buying new Buying car my new car. since Since coming Sunday. Okay, Sabita, what you have written? I will have been buying my new car since फिर नहीं लिखा Okay, लिखा ही नहीं okay. मैम Shushi, I will have हाँ, bought a car okay, coming Sunday. I will have bought a car coming Sunday. Okay, well tried. Shweta, have you written Shweta? No, actually you have joined late. Okay, no issues. Sampi, Ma'am, I will have been buying a car coming Sunday. I will have been buying a car coming Sunday. Okay, Dheeraj, मैम मैं हाँ, I have been buying a new car this Sunday. okay, Anuradha, I will have been buying a new car for coming Sunday. okay, Anuradha, Mom, I will buy my new car by this Sunday. I will buy. Okay, Reena, I will have bought my new car till Sunday. till Sunday. अच्छा गाइस, सबसे पहले मुझे बताओ टेंस कौन सा देख के क्या लग रहा है? मैं इस Fut- संडे तक, आज क्या है? आज मंडे है, ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट इस संडे मतलब जो आने वाला संडे है, इस संडे Fut- तक, इस Future संडे perfect. तक, Future हाँ, perfect. Continuous. फ्यूचर परफेक्ट है। Perfect. फ्यूचर परफेक्ट Continue. टेंस क्या हमने डिस्कस करा था? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है कि कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक मैं वो काम पूरा कर चुकी होंगी इन फ्यूचर। फ्यूचर में कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम हम मेंशन करते हैं और उस पीरियड तक मैं वो काम पूरा कर चुकी होंगी। तो इस संडे तक मैं अपनी गाड़ी खरीद चुकी होंगी, मतलब जो गाड़ी खरीदने का काम है वो मैं पूरा कर चुकी होंगी, कंप्लीट कर चुकी होंगी। कब तक? इस संडे तक। तो कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर Bought. परफेक्ट। Perfect. तो आई विल हैव Bought. Bought. तो गाइस, बॉट जो वर्ड है ना, बाय जो वर्ड है वो बेसिकली हम यूज करते हैं जैसे वेजिटेबल्स वगैरह के लिए, स्मॉल के लिए ये है ना? परचेज होगा। मैं हाँ, परचेज हाँ, परचेज जो थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव होता है। आई हैव परचेज। हाँ, तो अगर लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द कार, तो कार इज वेरी एक्सपेंसिव, सो एक्सपेंसिव थिंग्स के लिए भी ऑलवेज यूज द वर्ड परचेज, ठीक है? सो Correct. आई Understood. विल हैव परचेज्ड माय न्यू कार टिल दिस coming Sunday. टिल कमिंग संडे बोल दो, टिल दिस संडे बोल दो। टिल This क्या? Sunday, टिल correct. का इंग्लिश, हिंदी क्या हुआ? तक तक का इंग्लिश होता है टिल। till this Sunday, हाँ, right? ठीक है। इसका नेगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनाओगे इसका नेगेटिव? Will have. Will I have? will not have Is my new car. Not have this. अच्छा, सुरंगना स्पीक लाउडर। I will not हाँ, have purchased my new car till टिल coming संडे। इसका Right. इंटेरोगेटिव बनाओ, इसका इंटेरोगेटिव बनाओ। will have not been purchased new car Not have been, have होगा। मैं पहले have I will have हाँ, इंटेरोगेटिव में कैसे बनाओगे? जस्ट टेक आउट द फर्स्ट वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। will have not विल के बाद सब्जेक्ट लगाओ ना, विल के बाद सब्जेक्ट। I have been I हाँ, have not been purchased my new car till विल आई हैव परचेज्ड। बीन नहीं आएगा, बीन कैसे आ गया? सिंपल इंटेरोगेटिव बनाना है, विल आई हैव परचेज्ड माय न्यू कार टिल संडे। make it negative ना। नहीं, नेगेटिव में बस नॉट पुट करो। मैं माय क्वेश्चन वाज जस्ट मेक द इंटेरोगेटिव, ठीक है? चलो नेक्स्ट बोलो, सेंटेंस क्या था? सुशील, व्हाट वाज द नेक्स्ट सेंटेंस इन हिंदी? बच्चे 10 मिनट से शोर मचा रहे हैं। बच्चे 10 मिनट से शोर मचा रहे हैं। बनाओ सुशील इसका। Children are making a noise since 10 minutes. Since 10 minutes. Okay, Dheeraj. Children has been making a noise since 10 minutes. Okay, Chetna. Children are making noise for 10 minutes. Okay, Shweta.
Children were making noise since 10 minutes. Children were making noise since 10 minutes. Okay, मैं Sampi. बोल मैम एक या minute. Yes, I'm coming. After Sampi, I'm coming to you, Samir. Yes, Sampi. Children have been making noise since 10 minutes. Okay, great. Samir. द चिल्ड्रन हैव बीन मेकिंग नॉइज फॉर 10 मिनट्स पिछले 10 मिनट से फॉर 10 मिनट पिछले 10 मिनट से पिछले 10 मिनट पिछला 10 मिनट बोला है मैंने नहीं 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 10 मिनट से हाँ बच्चे हाँ, 10 हाँ हाँ तो क्या बनेगा समीर? द चिल्ड्रन हैव बीन मेकिंग नॉइज फॉर 10 मिनट्स For 10 minutes. The children, why you are saying the children? Simple children. Children, perfect. Samir is absolutely right. Children have been making noise for 10 minutes. For 10 minutes. ठीक है? चेतना is नहीं आएगा. Sorry, चेतना ने क्या बोला था? Is बोला था यार. श्वेता, you have told were. Guys, time mention है, time mention है, तो अभी तो हमने डिस्कस करा ना. If the time is mentioned, so you have to use have been or has been. ठीक है? Okay. What was the next sentence, Reena? Ma'am, please please let me tell the future perfect. I'm little confused about that tense. Future perfect. देखो future perfect tense क्या होता है? देखो perfect, you know, perfect मतलब when the work It is has completed. complete हो गया. अब here we are talking about the future. It means वो जो काम जो complete होगा वो कब होगा? Future में complete होगा. लेकिन एक specific period of time. We mentioned the one specific period of time, and till that period of time हमारा काम complete हो चुका हो. So in that case, we have to use future perfect. Future perfect. Suppose करो अनुराधा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ओके अनुराधा, आपकी अपनी ग्रामर की असाइनमेंट कब तक पूरी कर लोगे? आप कहते हो मैम कल इस समय तक मैं अपनी ग्रामर की असाइनमेंट कंप्लीट कर चुकी होंगी. Then I will have completed my grammar part. assignment till this time. Till this time. I will have completed my grammar assignment till this time. मतलब इस समय तक. अभी देखो इस समय जो है ना वो आने वाला कल है. So it seems कि that we are talking about the future. लेकिन उस टाइम तक मैं अपना ये काम पूरा कर चुकी होंगी. So will have completed. Will have completed. ठीक है? सपोज करो अच्छा एक और सेंटेंस लेते हैं. मैं कल सुबह तक प्रेजेंटेशन ऑफिस में दे चुकी होंगी. धीरज. हाँ अच्छा चलो अनुराधा तुम बनाओ. हाँ बनाओ. I will have submitted my presentation by tomorrow morning. By tomorrow morning. I will have submitted my presentation in the office by tomorrow morning. ठीक है? क्लियर? Yes ma'am. Yes. फ्यूचर इंडेफिनेट देखो. अच्छा चलो एक बार डिस्कस करते हैं. फ्यूचर इंडेफिनेट क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनेट जो सिंपल विल एंड शेल से हम सेंटेंसेस बनाते हैं. ओके, विल एंड शेल. शेल किसके साथ लगता है? बेसिकली हमारा आई एंड वी सब्जेक्ट्स के साथ हमारा शेल लगता है, एंड विल लगता है रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के साथ. ठीक है? But nowadays we can use will with all the subjects. No one can challenge कि you are saying wrong. We can use will with all the subjects, right? But still, if you want to use shall, but shall अगर use करना है, so then only you have to use the two subjects I and V के साथ, right? Second होता है हमारा future continuous. Future continuous tense कौन सा हुआ? Whenever the work will be going on in future. Future में वो काम चल रहा होगा. Future में वो काम चल रहा होगा. Suppose सुरंगना और सबिता में बात हो रही है. सुरंगना is saying to सबिता कि सबिता कल तुम सुबह क्या कर रहे हो? And सबिता is saying या कल इस समय सुबह तो मैं मूवी देख रही होंगी. कल सुबह 10 बजे मैं मूवी देख रही होंगी. सपोज सुरंगना इज सेइंग कि चलो सबिता हम मूवी शॉपिंग के लिए चलते हैं. सबिता इज सेइंग सुरंगना कल मैं सुबह 10 बजे मूवी देख रही होंगी. अब देखो कल सुबह 10 बजे दैट इज अ फ्यूचर. उस समय मैं वो काम मेरा हो रहा होगा, वो चल रहा होगा काम. मूवी देखने का काम मेरा चल रहा होगा.
तो कौन सा टेंस यूज करोगे इसको बनाने के लिए? I will be watching. I will be watching. Future continuous. Continuous tense आप यूज करेंगे. I will be watching movie at that time. या you can say, अगर आपने specify कर दिया, I will be watching movie tomorrow morning 10 p.m. or 10 a.m. I will be watching movie. बस simple. I will be watching movie. उस समय वो मैं काम कर रही होंगी, वो काम मेरा चल रहा होगा. ठीक है. सपोज करो कि क्या नाम है, सबिता प्लीज म्यूट सम नॉइस. सपोज अनुराधा इज आस्किंग टू रीना कि रीना कल सुबह क्या कर रहे होंगे. रीना इज सेइंग कि यार कल इस समय तो मैं स्टूडेंट्स की कॉपी चेक कर रही होंगी. मतलब जब तुम मुझे कॉल करोगे ना तो उस समय मैं स्टूडेंट्स की कॉपी चेक कर रही होंगी. रीना कैसे बनाओगे इस सेंटेंस को इंग्लिश में? I will be checking the copies of students. I will be checking the copies of students. So no need to mention tomorrow. जैसे ही आपने will be यूज कर दिया तो it means we are talking about the future. We are talking about the future. So no need to mention the tomorrow. Mention भी कर दोगे तो that is not considered as a wrong sentence. ठीक है. I will be. Future perfect is clear. Future perfect continuous, although we have to use very less usages. Future perfect continuous क्या होता है जिसमें हम टाइम मेंशन कर देते हैं. जैसे सपोज करो कल सुबह 10 बजे से मैं खाना बना रही होंगी. कल सुबह 10 बजे से मैं खाना बना रही होंगी. I will have been cooking food. हाँ, I will have been cooking food. मतलब अब जो खाना बनाने का काम है वो मैं 10 बजे से स्टार्ट कर दूंगी. मुझे नहीं पता वो मैं कब तक करूंगी. मतलब इट इज स्टिल गोइंग ऑन. सो I will have been cooking food कल 10 बजे से. क्या बनाओगे? हाँ बोलो. 10 o'clock. Since 10 o'clock. Okay, I will have been cooking food. अब देखो इसमें ये लिखो. Whenever you are talking about the future perfect continuous, we never ever use since. Since हमेशा हम यूज करते हैं either in the past or in the present. क्योंकि past में ही वो चीज specific है ना. Specific is in the past or in present. Future is always unpredictable. Future हमें नहीं पता वो होगा या When we नहीं use होगा. by. तो we have to use from. हम can we use by? नहीं, बाय होता है. बाय यूज होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट में. तक जब हम बोलेंगे तक, इस समय तक, then we have to use by or till. But whenever we talk about the कल सुबह से, so here we don't mention the since. तब हम बोलेंगे I will have been cooking food from tomorrow 10 a.m. From tomorrow 10 a.m. guys, you cannot use since in future tense. Future perfect continuous. हाँ, sorry, future perfect continuous. Yes, you cannot use future perfect continuous में आप since का यूज करेंगे. ठीक है. चलो. Okay, चलो नेक्स्ट सेंटेंस बोलो जल्दी से. समीर, what was the sentence in हिंदी? प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले साल 15 अगस्त पर भाषण दिया. प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले साल 15 अगस्त पर भाषण दिया. धीरज बनाओ इसका. Prime Minister Modi ji given speech on 15 August last year. Given speech. कौन सा टेंस है? कौन सा? एक मिनट, let him speak. धीरज, what is the tense? Past tense. Past tense, very good. Past tense का स्ट्रक्चर क्या होता है धीरज? Subject and then verb का second form. Sorry, Pradhan Modi ji gave speech on 15 August last year. Perfect. Perfect tense. Very nice. Okay. इसको थोड़ा सा और वे से कोई रिप्रेजेंट कर सकता है? Although Dheeraj has made a wonderful sentence. Ma'am, Modi ji. Shweta. Last year on 15th August, PM Modi gave a speech. हाँ, ठीक है. On 15th August last year, PM Modi gave a speech. Very good. Any other form in which delivered his speech. हाँ, पूरा बोलो, सेंटेंस पूरा बोलो.
Prime Minister Narendra Modi had delivered his speech Had delivered. on 15th August last year. Had Had delivered. No. Had PM Modi delivered a speech last year on 15th August. Yes. Sampi Yes, had right. नहीं आएगा. Simple last year mention कर दिया है, so it is a past indefinite tense. So indefinite tense का rule क्या होता है? You have to put only single verb that should be in the past tense. या तो gave a speech बोलो या delivered a speech बोलो. As I already told you, whenever we talking about the speeches, so we always use this verb deliver. ठीक है? So deliver seems to be more appropriate. Right. Okay, what was the next sentence? मैं कल स्कूल जाऊंगी. सबिता एक बार. सबिता कहाँ गई भाई? सबिता बोलो भाई, क्या है सेंटेंस हमारा? हाँ, मैं कल स्कूल जाऊंगी. हाँ, बनाओ इसका इंग्लिश. I will go to school tomorrow. Very good. I will go to school tomorrow. That is also okay. Or you can also say I shall go to school tomorrow. Both the sentences are right. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन बोलो सेंटेंस सुशील. हम कल इस समय फिल्म देख रहे होंगे. हम कल इस समय फिल्म देख रहे होंगे. बनाओ सुशील. We will have been watching the film tomorrow. We will be watching the movie tomorrow. We will be watching the movie tomorrow. Okay. Anil, is Sushil right? Yes, we will be watching movie tomorrow. Okay, Surangna. Tomorrow we will have been watching movie for this time. बट यहाँ पर हमने मेंशन तो करा ही नहीं कौन सा टाइम. और उस समय हम मूवी देख रहे होंगे. मूवी देख रहे होंगे मतलब मूवी देखने का काम चल रहा होगा. इस समय ना, हम कल इस समय मूवी देख रहे होंगे. हाँ, तो इस समय है ना. वी डिडंट मेंशन द एनी पास्ट टाइम ना. इस समय हम देख रहे हैं. सो कौन सा टेंस है ये? that time. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है. अनुराधा. Yes, ma'am. I will be watching movie at the same time tomorrow. फ्रॉम होगा. फ्रॉम टुमारो दिस टाइम. अभी मैम बताइए ना. आई विल हैव बीन कुकिंग फूड. नहीं, आई विल हैव बीन के साथ नहीं. इसमें सिंपल बोलो. आई विल बी वॉचिंग मूवी एट दिस टाइम. इस समय पर. इस समय की इंग्लिश क्या होगी? एट दिस टाइम. एट दिस टाइम. At this time. हाँ. We should not need to mention tomorrow. No, if you are using will be, it is okay. Yes, ma'am. First I wrote at this time. Then one person said tomorrow. Then I added tomorrow. नहीं, tomorrow भी लगा दूंगी अनुराधा. तो this is not considered as wrong. This is not considered as wrong. Tomorrow is also okay. ठीक है, चलो next. रीना. Ma'am, it's a future perfect continuous or simple. No, this is a future continuous. फ्यूचर परफेक्ट. Simple. This is simple future continuous. अगर संपी सेंटेंस होता ना, मैं कल 10 बजे से मूवी देख रही होंगी. यहां पर मैंने मेंशन कर दिया 10 बजे. तब आप बनाएंगे इसको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. करेक्ट. यस. रीना, व्हाट वाज द नेक्स्ट सेंटेंस इन हिंदी? जब मैंने लॉगिन किया तो ग्रामर की क्लास स्टार्ट हो चुकी थी. यस, जब मैंने लॉगिन किया तो ग्रामर की क्लास स्टार्ट हो चुकी थी. हाँ. When I logged in, till then grammar class had been started. Okay, well tried. Sameer? Yeah, ma'am. When I log out, then grammar classes had started. Login. Yeah, login. हाँ. Login से पहले log out. हाँ. When I log in, then grammar class had started. Grammar class had started. When I log in, the grammar class had started. Yeah. Chetna, is this a right sentence? Yes, ma'am. Yes. Ma'am, can I make this sentence like the grammar class has been starting? The grammar Then class. I have logged. Anuradha, speak louder. The grammar class. The grammar class has been starting when I have Has logged. been starting. No, ma'am.
has been start. Ma'am, yes, has been starting. No, no, no. Not because the let me think. First, what we have done. Shishir? Yes, Is sir. this past perfect When now, I ma'am? logged in, then grammar's class had started. Okay. Grammar class had been. देखो tense सही use करा है. The grammar class had been started. Had been started use कर दो. बस. Only this is a difference. The grammar. When I logged in. There are the two actions in this sentence. कौन सा first action कौन सा है? Second action कौन सा है? You have to check. First ma'am, past indefinite. Class has started. नहीं. First sentence होता है past perfect में. Past perfect में action 1 should be in past perfect, action 2 be in past indefinite. कौन सा एक्शन पहले हुआ है? आपने पहले लॉग इन करा है या पहले ग्रामर की क्लास स्टार्ट हो गई थी? पहले ग्रामर की क्लास स्टार्ट हो गई थी. तो ये कौन सा टेंस में बनाएंगे? ग्रामर क्लास हैड बीन स्टार्टेड बिफोर आई लॉग्ड इन. What was the next sentence? पानी 100 डिग्री पर उबलता है. हाँ, पानी 100 डिग्री पर उबलता है. बनाओ इसका. Water is boiled at 100 degree. Anil, speak louder. Water is boiled at 100 degree temperature. Water is boiled at 100 degree. Okay. Sampi? Boils at 100 degrees Celsius. Sampi? Boils. Water. 100. Water 100 डिग्री पर उबलता है. Ma'am, water boils at 100 degrees Celsius. Okay. Well tried. Yes, ma'am. Water is singular or plural, ma'am? Water. Singular or plural? Singular ले लिया हमने. फिर आगे. So it's water boils. Water boils at 100 degrees Celsius. Water boils at 100 degrees Celsius. अब यहाँ पर सभी था, यहाँ पर DN, यहाँ पर singular plural का नहीं बात कर रहे. यहाँ पर this is a universal truth. This is a universal truth, guys. आप चाहे वाटर को दिल्ली में बॉयल करो, चाहे इलाहाबाद में बॉयल करो, चाहे पाकिस्तान में बॉयल करो, चाहे कहीं पर भी बॉयल करो, वाटर हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होता है. दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ वी ऑलवेज मेक्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट. ठीक है. सो वाटर बॉइल्स. चेतना, व्हाट वाज द लास्ट सेंटेंस? मैंने अभी अपना डिनर फिनिश किया है. हाँ, मैंने अभी अपना डिनर फिनिश किया है. बनाओ चेतना. I have just finished my dinner. I have just finished my dinner. Okay, well tried. Very nice. Reena, is Chetna right? Yes, ma'am. I have finished. I have finished my dinner. I have just finished my dinner. Sabita, is this sentence right? Yeah, ma'am. I have just finished my dinner just now. I have finished my dinner just now. This is also okay. Sampi? Yes, ma'am. I have finished my dinner. I have finished my dinner just now. Yeah, you can also say I have just finished my dinner. अभी किया है, लेस टाइम है, बट काम जो काम है वो कंप्लीट हो गया है. So then you have to frame that sentence into present perfect. Any more? Ma'am, I just want to know if this is the rule. If something is started in the past, then we have to use the past indefinite. We should not use past perfect. As I make that sentence, the grammar class had been starting when I have logged in. No. Is it the rule? It is a rule, na? Anuradha, we didn't discuss this rule. How to make the past perfect? No.
So guys, you never asked. We didn't discuss this rule. No, Past ma'am. perfect. No, अच्छा, देखो सुनो. not yet. Not Okay, yet. okay. So sorry, it's my bad if I didn't discuss the rule. Okay, now I'm going to tell you how to make the past perfect sentences. Sorry. क्या आ गया? I hope the screen is visible. Screen ma'am. is visible. Yes, Yes. yes, Yeah, yeah, yes. ma'am. Past perfect tense जो होता है वो always used in the compound sentences. Compound sentences में हम use करते हैं past perfect sentences, past perfect tense को. Compound sentences का मतलब होता है when we are talking about the two sentences together, two sentences. अब two sentences में there must be the two actions. अगर दो sentences हैं तो दो actions होंगे. तो जो action one है that we have to frame in past perfect. और action two जो है action two that we have to make in past indefinite. ठीक है. एक्शन वन मतलब होता है जो काम मेरा पहले हुआ है. एक्शन टू मतलब जो काम मेरा बाद में हुआ है. जस्ट यू हैव टू कीप दिस टू रूल्स इनटू योर माइंड. पास्ट परफेक्ट का आपको स्ट्रक्चर पता है. पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 फॉर्म. ठीक है. व्हाट इज द पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V2. बस ये दो स्ट्रक्चर्स आपको माइंड में रखने. Done? Yes, ma'am. Right. For example, चलो we are going to discuss the example. Suppose डॉक्टर के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले पेशेंट मर चुका था. डॉक्टर के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले पेशेंट मर चुका था. अब यहाँ पर गाइस दो एक्शंस हुए हैं. दो एक्शंस क्या हुए हैं? पहला एक्शन क्या हुआ है? पेशेंट मर चुका था. Patient had दूसरा been एक्शन died. क्या हुआ है? डॉक्टर पहुंचा. Died. हाँ, तो कैसे बनाओगे? द पेशेंट हाँ Died. Had had been died. Had died. Patient Had had died When before the doctor doctor reached the hospital. or arrived. हाँ, arrived भी बोल सकते हो. The patient had died. Patient मर चुका था. This was action one. Action one. तो इस action one को you have to frame in past perfect. The patient had died. सुरंगना. Now सुरंगना will speak. ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं सुरंगना. मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले मेरे बॉस जा चुके थे. बनाओ. मैं ऑफिस पहुंचने से पहले मेरे बॉस जा चुके थे. Boss I Uh, had used अच्छा सर, चलो कुछ सेंटेंसेस लिखो. पहले लिखो कुछ सेंटेंसेस अभी मेरे माइंड में आ रहे हैं. लिखो. मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले मेरे बॉस जा चुके थे. ठीक है, जल्दी जल्दी लिखना. सेकेंड सेंटेंस. मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे बच्चे खाना खा चुके थे. मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे बच्चे खाना खा चुके थे. नंबर थर्ड. हमारे एग्जामिनेशन हॉल पहुंचने से पहले पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे. हमारे एग्जामिनेशन हॉल पहुंचने से पहले पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे. नेक्स्ट. मेरे मूवी हॉल पहुंचने से पहले मूवी स्टार्ट हो चुकी थी. मेरे मूवी हॉल पहुंचने से पहले मूवी स्टार्ट हो चुकी थी. नेक्स्ट. मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी.
मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी। नेक्स्ट, मेरे पूछने से पहले ही उन्होंने मूवी टिकट्स बुक करवा दी थी। मेरे पूछने से पहले ही उन्होंने मूवी टिकट्स बुक करवा दी थी। Ma'am, please repeat. मेरे